Hi friends, welcome to Excel and Exceed Education and you're watching the TLS show, that is the Language Academy. Last video में we have discussed about the close passage, the strategies that we can apply जिससे कि हम अपनी complexities को जब भी हम close passage करते हैं तब हम कम कर सकते हैं या हम अपने choice of options को narrow कर सकते हैं, right? हमें बहुत confusion होता है close passage में, तो सारे confusions को कैसे दूर करना है वो हमने last session में किया था. जिन्होंने भी लास्ट सेशन नहीं देखा है, लास्ट वीडियो नहीं देखा है क्लोज पैसेज का, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उस वीडियो को देखें एंड देन एंड ओनली देन आप इस सेशन को बेहतर तरह से समझ पाएंगे. ऑल्सो इफ यू लाइक our videos, then do like and subscribe our channel. Go for the notification bell as well, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे about our new videos or the new sessions, right? चले, तो आज जो है हमने जो स्ट्रैटेजीज बताए थे आपको, जो अप्रोचेस बताए थे, उनको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है, कैसे उनके मदद से आपको क्लोज पैसेज सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है, विल डिस्कस दैट. Okay, so first thing that I've stated was that we will have to skim the passage. एक क्विक थरो रीड लेना होगा हमें अपने पैसेज का, जिससे कि हमें समझ आए कि एक्चुअली में जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कह रहा है अबाउट दिस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस. We'll give it a quick read, a quick one. I've written it here for you. Also, we'll be discussing it in two different parts, right? हमने देखा है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी यही बेहतर है, और जो previous examinations we've seen, उधर वहाँ पर भी there was same thing. We've seen that there's always been a closed passage PU examination जिसमें कि एक लेंथी सा पैसेज आता है और approximately 10 फिलर्स होते हैं, right? तो 10 फिलर्स हमारे पास भी हैं, बट हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले हम 5 फिलर्स डिस्कस करेंगे in the first part, and the next part I'll write it again for you. We'll be discussing the 5 next pillars for this. Okay, we'll be discussing the whole closed passage. Chale, we'll give it a quick read. You can read it along with me. Chale. By launching the GSAT-9 South Asia satellite, India has reaffirmed the Indian Space Research Organization's or ISRO's scientific blank. But the messaging is perhaps more geopolitical than geospatial. See, geopolitical, you can just jot it down. उसका मतलब होता है कि जो ज्योग्राफी है हमारी, उससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है, right? That is geopolitical. When it comes to geospatial particularly means geographic location, which is pertaining more of specially for data. ठीक है, तो ये geographic you can say geographic location, geospatial, and geopolitical is complete जो international politics है उस पर geography का क्या असर पड़ता है. Then, to begin with, the center has kept its promise of considering India's neighborhood first. Within a month of taking blank as Prime Minister in 2014, Narendra Modi went to Sriharikota for the launch of PSLV C-23 and ISRO scientists to ISRO scientists to build this satellite for the South Asian Association for Regional Cooperation. The decision was then announced at the SAARC summit in Kathmandu, and the government has kept its blank of gifting its neighbors at least one transponder each on the GSAT-9. India has no doubt gained goodwill blank the subcontinent through the gesture. So, we have got an idea कि ये जो passage है, the closed passage basically is talking about a satellite launch, जिससे कि हमारे इंडिया और जो दूसरे कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज, उनके रिलेशंस में कैसी क्या बात चल रही है, about geopolitical reasons, right? We're talking about that. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया का हमेशा एक मोटिव रहा है कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं. मिस्टर मोदी also talks about the same thing. That is what we have discussed in this closed passage. So let's, without wasting time, let's get started with the first pillar. Please do remember this, that we'll be discussing the strategies that we have discussed earlier. We'll be applying those strategies.
So the next point, the first thing was to skim the passage. हमने सबसे पहले देखा कि हमें thorough read करना है, उसको देखना है, जांचना है कि उस comprehension में, उस passage में क्या कहा जा रहा है, उस clause में क्या कहा जा रहा है. Now what we'll do is हम उसका meaning समझेंगे, अर्थ समझेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है, हमारा माइंड क्या परसीव कर रहा है, किस तरह से हम हमारे माइंड में जो शब्द आया है उसको अपने ऑप्शंस के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कौन सा वर्ड होगा वो, राइट. विल डिस्कस एवरीथिंग. चलिए, फर्स्ट पिलर, वील टॉक अबाउट द फर्स्ट पिलर नाउ. इट सेज, by launching the GSAT-9 South Asia satellite, India has reaffirmed the ISRO's scientific blank, but the messaging is perhaps more geopolitical than geospatial. Now, GSAT-9 satellite launch करने से इंडिया ने ISRO के साइंटिफिक ब्लैंक को रीअफर्म किया है. वो ब्लैंक में क्या, जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस, राइट, वो उभर कर सामने आती है, उसको हम लोगों के सामने प्रूव कर पाते हैं. तो सिमिलरली जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इससे इंडिया ने इसरो के साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक स्किल या इंटेलिजेंस को फिर से रीअफर्म किया है, साबित किया, राइट. दैट इज व्हाट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज की. तो अगर देखें तो मेरे हिसाब से इस ब्लैंक में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसा शब्द जिसका मीनिंग हो स्किल, नॉलेज या इंटेलिजेंस. इन तीनों में से कोई एक मीनिंग का शब्द होगा जो यहाँ पर फिल हम कर सकते हैं. सो लेट्स सी हम किस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हमारे ऑप्शंस में वी हैव इनएप्टिट्यूड, cowardice, folly, prowess एंड स्टडी. मैंने तभी भी कहा था आपको that vocabulary is the key. हमें शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए. prowess का मतलब क्या है, ineptitude का मतलब क्या है, अगर नहीं पता तो हम इस पिलर को तुक्के के साथ जो हम करते हैं गेस वर्क, हम वैसा नहीं कर सकते, वो हम रिस्क बढ़ाते हैं फेलियर का, राइट. सो दैट इज व्हाई वी मस्ट नो द मीनिंग द वर्ड्स. Now, ineptitude, this word means, inept का मतलब होता है जिसके पास कोई skills ना हो. So, ineptitude का मतलब है unskillful, right? क्योंकि ये negative word है, हमने तो कहा था कि skill को prove कर रहे हैं, जिसके पास skill नहीं है वो चीज साबित थोड़ी कर रहे हैं, which means this is a negative word which cannot be stated. We'll just and just remove this, eliminate कर सकते हैं. Cowardice, कायरता, एक और नेगेटिव शब्द, रिमूव. फॉली मतलब फुलिशनेस, जिनकी वजह से हम बहुत गलतियां करते हैं. फुलिशनेस अगेन अ नेगेटिव वर्ड विच कैन नॉट बी यूज. मैंने कहा स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज या इंटेलिजेंस, राइट, ऐसा कोई शब्द चाहिए. प्रावेस, प्रावेस का मतलब होता है स्किलफुल, right, which means we have our word, we have our alternate, a substitute word, we have it. So prowess is our answer, but let's just look for the fifth option as well. हो सकता है और बेहतर या genuine शब्द हो, which is study, which is not that genuine, right. Scientific study से बेहतर है scientific skill को साबित किया है उन्होंने, right. So scientific skill, which means scientific prowess को उन्होंने reaffirm किया है. So our answer here will be prowess, the fourth option, which means skillful, right. Chalo, so we'll just read it. By launching the GSAT-9 South Asia satellite, India has reaffirmed the ISRO's scientific prowess, but the messaging is perhaps more geopolitical than geospatial. To begin with, the center has kept its promise of considering India's neighborhood. सेंटर ने ऐसा कर, अगर इसके साथ हम बात करें तो सेंटर ने एक पॉइंट को साथ लिया है, कंसिडर किया है, जो कि है अपने नेबर कंट्रीज को, उनको भी अपने मद्देनजर रखा है, राइट. Within a month of taking blank as Prime Minister in 2014, Narendra Modi went to Sriharikota for the launch of PSLV C-23. With a month of taking blank as Prime Minister in 2014, जब हम बात करें विद इन अ मंथ ऑफ, मतलब एक महीने के अंदर अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्होंने वो पद संभाला, प्राइम मिनिस्टर ने वो पद संभाला, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने. जब हम बात करें पद संभालने की, तो एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है.
कंफ्यूजन हमें बहुत होगी यहाँ पर, हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है ऑफ, ओवर, अयॉन्ड, अप एंड फॉर। टेकिंग ऑफ, लेट्स जस्ट राइट इट O double F, it's OF. Taking off, we all know, take off, flights take off, plane take off करते हैं, right? So will it be within a month of taking off as Prime Minister? No. This phrasal form is incorrect. Phrasal verb is basically a verb with different prepositions, and with different prepositions the meaning also changes. Like for example, give up or given. When you say give up, you are stating give up मतलब quit करना, त्याग देना. गिव इन का मतलब अग्री करना या सरेंडर करना किसी बात से, राइट? तो इस तरह से मीनिंग बदलता है. टेक ऑफ इज इनअप्रोप्रिएट, एलिमिनेटेड. मैंने कहा उन्होंने पद संभाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वैसा ही कुछ शब्द चाहिए ना मीनिंग. टेक ओवर का मतलब होता है टू अज्यूम कंट्रोल, कोई कंट्रोल या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, विच मीन्स वी हैव आवर आंसर. बट हमें आगे भी देखना होगा और ऑप्शंस क्या हैं. Take ayond. Ayond is nothing but it is a synonym. It is a preposition. It is synonym to the preposition beyond. Ayond is a synonym or it is synonymous to beyond. So this is again take beyond or take ayond. That is inappropriate. We cannot write within a month of taking beyond as Prime Minister. That is inappropriate. Then we have taking up. Taking up. Take up का मतलब क्या होता है? You take up something to do, you choose something to do on a regular basis, right? You choose something like summer vacations है, तो हमने कोई चीज को लिया just to discuss to have something, to opt for something, right? That is take up. Take for, like we all say, you have taken me for granted, or I took you for somebody else, मतलब मैंने तुम्हें किसी और के तरह समझा, right? So take for again inappropriate, which means these three options are eliminated. We are left with only one word, that is take over. And as I have stated it, take over का मतलब होता है कि कोई कंट्रोल को लेना या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना. So our answer here will be within a month of taking over as Prime Minister in 2014, Mr. Narendra Modi went to Sriharikota for the launch of PSLV C-23 and blank ISRO scientists to build this satellite for the South Asian Association for Regional Cooperation. अब वहां जाकर, श्रीहरिकोटा जाकर प्राइम मिनिस्टर ने साइंटिस्ट को, इसरो साइंटिस्ट को कुछ कहा. अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, उन्होंने कुछ कहा which means this will take an action word. An action word is a verb. यहां से एक हिंट मिला, एक कॉन्टेक्चुअल क्लू मिला हमें, ठीक है, कि वहां पर एक वर्ब आ सकता है. दूसरी बात, यहां पर कोई नेगेटिव शब्द आ सकता है नहीं, हेल्दी शब्द आएगा, पॉजिटिव एंड हेल्दी, विच मीन्स कोई नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, क्योंकि जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा उनसे, राइट? वो या तो उनको पूछेंगे या उनको बोलेंगे ऐसा करने के लिए, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस वी हैव. फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज चैलेंज्ड. सो कैन वी से दैट द प्राइम मिनिस्टर, okay, Mr. Narendra Modi went to Sriharikota for the launch of PSLV C-23 and challenged ISRO scientists to build this satellite. बिल्कुल, he challenged, उन्होंने एक healthy challenge put किया उनके सामने कि आप ऐसा करके दिखाइए, right? So we can have this option, but we'll see the other options as well. Then we have threatened. So threatened, मैंने कहा एकदम extreme negative word, sorry we cannot take this. Prime Minister will not threaten the scientists to get some work done, ठीक है. उनको धमकी नहीं देंगे वो कि भाई ये करना ही है तुमको, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा. It will not be so, right? Third option that we have is susceptible. Now as I've just said this, that in this filler we require an action word that is a verb, but susceptible is an adjective. Susceptible क्या है? एक एडजेक्टिव है. ससेप्टेबल मतलब समथिंग दैट गेट्स इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जिसे बेसिकली वन वर्ड में हम सेंसिटिव भी कहते हैं, ठीक है. सो एंड ससेप्टेबल इज रोज, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट. लेट्स मूव अहेड. होवर्ड, लाइक वी से द क्लाउड्स आर होवरिंग इन द स्काई, मतलब मंडरा रहे हैं. तो मंडरा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके साइंटिस्ट के सिर पे नहीं मंडरा रहे हैं कि ये करो, राइट? सो विच इज अगेन इनअप्रोप्रिएट.
And then we have our fifth option, which is wayward, which means to sway, to sway back and forth, right? So again, this is an appropriate word यहाँ पर prime, and so wayward is those scientists उनको आगे पीछे भगाया, push किया, sway किया. Will it be possible? No. So which means again we have eliminated this word. We can eliminate this word. We are left with challenge, and our appropriate answer is challenge, which means we'll say that Narendra Modi went to Sriharikota for the launch of PSLV C-23 and challenges those scientists to build this satellite for the South Asian Association for Regional Cooperation. The decision was then announced at the SAARC summit in Kathmandu, and the government has taken its blank, has kept its blank of gifting its neighbors at least one transponder each on the GSAT-9. यहाँ पर अगर मीनिंग समझे तो ऐसा मीनिंग निकल कर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस रखा. प्रॉमिस क्या था? गिफ्टिंग इट्स नेबर्स वन ईच ट्रांसपोंडर ऑन ईच GSAT-9. तो जो प्रॉमिस का शब्द है वो हम यहाँ ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए. चलिए, पहली चीज यहाँ पर पॉजिटिव शब्द आएगा, प्रॉमिस, राइट? ऐसा ही कुछ शब्द आएगा कि उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा. the government kept its promise. So we have first option is adhere. Adhere का मतलब होता है to stick to something, right? We should adhere by the laws. We should stick to the laws. So adhere of gifting, no. Meaning promise चाहिए, नहीं है. We then have commitment. That means a promise. That means a promise. That is a promise. So this can be our answer. Third option is loyalties. Sorry, loyalty और honesty होता तो शायद हम सोचते भी. But loyalties has kept its loyalties of gifting. No, that is inappropriate. Then we have has kept its strength, ताकत. No. Promise का meaning हमें मिल चुका है, which means हमें और कुछ करना ही नहीं. Our answer is commitment, which means the decision was then announced at the SAARC summit in Kathmandu, and the government has kept its commitment of gifting its neighbors, at least one transponder each on the GSAT-9, right? And then a last sentence will be India has no doubt gained goodwill blank the subcontinent through the gesture. So here in the fifth filler, now we have that we are saying कि इंडिया ने इस gesture के थ्रू ये सैटेलाइट लॉन्च ट्रांसपॉन्डर वो दे रहे हैं on each GSAT-9 अपने नेबर्स को, इस gesture के थ्रू इंडिया ने बहुत गुडविल अर्न किया है all over the subcontinent. Mark my words, I'm saying all over, मतलब विख्यात हो गए हैं, right? बहुत पब्लिसिटी मिली है उन्हें. So we can either state all over, right? We have an option as over, but यहाँ नहीं लिखा ना all over. We cannot say over the subcontinent. That is inappropriate. Can we say above the subcontinent? No. Over and above, they work as both are prepositions. Like for example, if I say that someone is lying और I place a blanket, मैं उनके ऊपर एक चादर उड़ाती हूँ, तो आप क्या कहते हो? That I place a blanket above him or I place a blanket over him. We state it as over him or her. I place a blanket over my brother. I place a blanket over my sister. The clouds are hovering over the city. The plane is moving above the city, right? Which means the lower object is supposed to be completely covered. जो lower object है उसे completely cover होना चाहिए. तभी over, otherwise above, right? So in this case, over and above both are inappropriate. Let's see the third option, which is across. Across का मतलब होता है एक point से दूसरे point तक. Across the bridge we say, right? Which is from one end to the other end. तो ये बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने पूरे across the subcontinent एक end से दूसरे point तक पूरी तरह से उन्हें बहुत publicity goodwill earn किया उन्होंने. And this will be an appropriate answer because in or at are not suitable. In the subcontinent
or at the subcontinent are inappropriate. So our fifth option is across the subcontinent. India has earned, or India has no doubt gained goodwill across the subcontinent through the gesture. Right? So these are the 5 pillars that I said that we'll be discussing in the first part. Then we'll move on to the second part. I hope these 5 pillars and the options, I've made it clear to all of you, they are evident. And then now we'll move on to our second part. Okay.